नमस्कार। हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 2 चैप्टर 8 पार्ट ए से लेके ई तक इसमें दो अकाउंट्स के बारे में बताया गया है। एक शेरिफ पेटी अकाउंट्स और एक सिविल कोर्ट डिपॉजिट अकाउंट्स। These accounts are maintained by the सिविल नाजिर। जो शेरिफ पेटी अकाउंट है ये डील करता है विद द अमाउंट्स ऑफ प्रोसेस सर्विंग एजेंसीज, जबकि सिविल कोर्ट डिपॉजिट अकाउंट डील करता है विद अमाउंट्स अदर देन शेरिफ पेटी अकाउंट, जो बकाया जितने भी अकाउंट्स हैं। डिफरेंट प्रोसीजर इज प्रिस्क्राइब्ड टू डील विद दीज अकाउंट्स। However, both accounts mainly prescribe for maintaining register of receipts, register of disbursement, and cash book. इसमें जो सेक्शन ए है हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स का वॉल्यूम 2 चैप्टर 8 ई पार्ट ई का, उसमें रूल 1 कहता है कि सिविल कोर्ट डिपॉजिट्स उसमें कौन से अमाउंट्स आते हैं, वो है विच आर आइदर पेड इनटू कोर्ट और पेड इनटू द ट्रेजरी under the orders of the court with the intention that they should be paid out again either to the depositor or to a third person, and should not be finally credited to government until they lapse to government under Article 206 Civil Account Code Volume 1। मतलब वो पैसे आएंगे, जमा होंगे और निकल जाएंगे। Civil court deposit accounts relate to all deposits other than those which may properly be included in sheriff's petty accounts. The large majority of such items are decretal amounts. इसकी जो लिस्ट है वो शेड्यूल ए में दे रखी है, और इसमें जो अमाउंट आता है which may properly be included in civil court deposit accounts, that is money paid into court by parties in anticipation of judgment, preemption amount, preemption money जिसको कहते हैं, decretal amounts paid in by judgment debtors or by their superior officers when their pay is attached, or by other courts on attachment of a decree. फिर जो अमाउंट्स रियलाइज्ड इन एग्जीक्यूशन बाय बेलिफ्स और कोर्ट ऑक्शनर्स। फिर इंसॉल्वेंसी कोर्ट के लिए जहां एडवर्टाइजमेंट चार्जेस होते हैं, रियलाइजेशंस फ्रॉम एस्टेट्स समरली एडमिनिस्टर्ड। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए कंपेंसेशन फॉर लैंड एक्विजिशन डिपॉजिटेड बाय कलेक्टर, deposits for court fee in probate, letters of administration, and succession on succession certificate cases, etc. फिर compensation deposited with district judges or subordinate judges appointed as commissioners under the Workmen's Compensation Act. फिर जो डिपॉजिट्स आते हैं पंजाब रिलीफ ऑफ इंडेटनेस एक्ट के अंडर। देन जो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड होती है बाय अ सिविल कोर्ट एंड इट इज डिपॉजिटेड बाय अ पार्टी टू अ सूट, दैट अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी इज अगेन सिविल कोर्ट डिपॉजिट अकाउंट। देन money realized in liquidation proceedings when this is not paid into an account opened by the liquidator with the State Bank of India, या फिर any other amount received by a civil court in a case and which cannot be disbursed immediately
but in no case will money be deposited in these accounts, which under other rules is straight away to be credited in government revenue. Then particulars of the warrant to be entered in bailiff's notebook. जब वारंट हैंडओवर होता है बेलिफ को फॉर एग्जीक्यूशन, उसके सारे पर्टिकुलर्स जो है वो कॉलम नंबर 1 से 9 तक अपनी नोटबुक में नाजिर एंटर करेंगे. The remaining columns should be completed by the bailiff or the nazir as the case may be after execution of the warrant. वारंट से पहले जब हैंडओवर होता है तो कॉलम 1 to 9 और बाकी कॉलम्स उसके बाद. अगर जो अमाउंट टू बी रिसीप्टेड है ऑन द पेमेंट वाउचर exceeds ₹500, the claimant will be required to affix a revenue receipt stamp of ₹2. Then हर एक कोर्ट जो है shall have a separate personal ledger account for its deposits, जो कि शेरिफ्स पेटी अकाउंट से अलग होगा. Under Rule 53 of Chapter 4B, Rules and High Court Rules and Orders, Volume 2, जहां इनिशियल डिपॉजिट है पार्टी के द्वारा इन इंसॉल्वेंसी केसेस, it is to be shown as a deposit under these rules. Then separate registers with regard to such sums may be maintained provided the nazir or cashier remains responsible for the accounts and combines these with the rest of the civil court deposit accounts at the end of the month. तो ये जो है ये रूल 7 में लिखा हुआ है. This is with regard to initial deposit by applicant in insolvency cases. Rule 8 कहता है कि there will be a separate set of accounts for each court. और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है हर एक कोर्ट का, वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द सुपरविजन ऑफ द अकाउंट्स ऑफ हिज ओन कोर्ट. अगर वो पावर्स डेलीगेट करने हैं तो हाई कोर्ट से परमिशन लेनी होगी. When an additional judge is appointed to a small cause court, a separate account will be opened and there will also be a separate account for the court of registrar. अब नाजिर जो है इसको डिफाइन किया गया है रूल 9 में, और इसमें कैशियर और नायब नाजिर इंक्लूडेड है. अब जो मनी ऑर्डर्स आते हैं, मनी ऑर्डर्स एड्रेस्ड टू द कोर्ट्स must be signed by the presiding officer and by no one else except another judicial officer appointed to discharge the duties of the presiding officer during temporary absence. जो सुपरिंटेंडेंट हैं, क्लर्क्स हैं या सीओसी है या कोई भी मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, वो कोई भी मनी ऑर्डर्स को साइन नहीं कर सकता जो कि मनी ऑर्डर एड्रेस टू द कोर्ट्स. जब वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर अमाउंट को रिसीव करते हैं, वो देखेंगे, चेक करेंगे दैट द नाजिर हैज एंटर्ड sufficient particulars thereof to identify the transactions in the court's intermediate register.
उसमें नाजिर ने सब पर्टिकुलर्स लिखने हैं जिससे कि आइडेंटिफाई हो पाए कि ये मनी ऑर्डर कहाँ से आया, किसने भेजा, किस केस ने भेजा, किस पार्टी ने भेजा. All the particulars to identify the money order should be mentioned in the court's intermediate register, and he will then initial the intermediate register in respect of the transaction and sign the money order receipt. कौन करेगा? Presiding officer. Before handing over the receipt to the postman and the money with the money order coupon to the Nazir for further disposal. जो ये मनी ऑर्डर कूपन आता है, it shall be treated as the depositor's application and the procedure with regard to such application shall be followed. अब presiding officer ने देखना है कि all items in the intermediate register are cleared by transfer entries to the register of receipts on the day of receipt if possible, and initial both the intermediate register and the register of receipts in verification of this having been done by the Nazir. अब जो कोर्ट्स कैश सिस्टम फॉलो कर रहे हैं उसके लिए रूल 11 में बताया गया है. ये जो सिस्टम है, दिस इज फॉलोड बाय स्मॉल कॉज कोर्ट्स ऑफ स्मॉल कॉजेस इन अमृतसर एंड दिल्ली, एंड जो और कोर्ट्स है जहां पे ट्रेजरी नहीं है या सब ट्रेजरी नहीं है. अब सिस्टम ऑफ अकाउंट्स है, इसके बारे में रूल 12 में दिया गया है. मेन तौर पे ये उसी तरीके से मेंटेन होगा जैसे शेरिफ्स पेटी अकाउंट्स मेंटेन होता है, बट जो प्रिंसिपल पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस हैं वो हैं the audit authorities are required to check the disposal of all civil code deposits, and a detailed return of all receipts and payments must be made to the accountant general. ये rules 36 and 37 में बताया गया है. And in certain cases, repayment may be made by check instead of cash. And these repayments have to be treated differently from withdrawals from the treasury made under the sheriff's petty accounts rules. So इसमें आपने रीपेमेंट जो है चेक के द्वारा भी कर सकते हैं क्योंकि ये अमाउंट किसी ने डिपॉजिट किया और आगे ट्रांसफर हो गया. रूल 13 जो है उसमें a detailed list of the registers and forms to be maintained is given in schedule B to these rules. मोटे तौर पे जो रजिस्टर्स हैं वो हमने अभी बात की, रजिस्टर ऑफ रिसीट्स, रजिस्टर ऑफ डिसबर्समेंट्स एंड कैश बुक. ये वही वैसे ही मेंटेन होंगे जैसे कि शेरिफ्स पेटी अकाउंट्स रूल्स में. रजिस्टर ऑफ रिसीट्स, रजिस्टर ऑफ डिसबर्समेंट्स एंड कैश बुक. अब डिफरेंस क्या है इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्टर ऑफ डिसबर्समेंट्स? इसमें जो पेमेंट कॉलम है दैट इज सब डिवाइडेड इनटू 2 columns, cash and treasury. For recording cash and check payments separately for facility of posting in the cash book. तो ये जो रजिस्टर्स हैं इनको शेरिफ्स पेटी अकाउंट से अलग ही रखा जाएगा. अब रजिस्टर ऑफ रिसीट्स जो है ये अपने आप में ही एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट है and should be confined to money received either in cash
और बाय मनी ऑर्डर। क्या एंट्रीज होंगी रजिस्टर ऑफ रिसीट्स में? जो पैसा आया है मनी ऑर्डर या कैश के द्वारा। एंट्रीज जो है शुड बी मेड स्ट्रिक्टली इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ रिसीट्स। Either in the number of receipts issued should be serially noted in column number 2 of the register. Date wise आपने लिखना है इसमें, जैसे जैसे आप इशू करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा and so on. Whenever any entry of disbursement is made in the register of disbursements, the item is again entered in the register of receipts against the original deposit with a view to guard against improper disbursement. रजिस्टर ऑफ रिसीट्स में जहां एंट्री हुई है रिसीट की, उसके आगे आप लिख देंगे बाद में कि ये अमाउंट डिसबर्स हो गया इस एंट्री के द्वारा। Progressive total of daily receipts should be made beneath the daily total and continued till the end of the month. रोज आप लिखते रहेंगे सीरियल वाइज। उसके बाद एंड ऑफ द मंथ में आप नेट बैलेंस जो है आपके पास, जो आप कैरी फॉरवर्ड कर देंगे मंथ टू मंथ टू वर्क आउट द प्रोग्रेसिव नेट बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में। तो हर मंथ का जो पैसा बचता जा रहा है उसको एंड में ऐड करते रहेंगे। तो दिस बैलेंस शुड एग्री विद द टोटल ऑफ द बैलेंसेस appearing in the treasury and cash columns in the cash book. ये अमाउंट आपने रिकंसाइल करना है, सेम होना चाहिए जो आप डे टू डे एंट्री कर रहे हैं, जो आपकी ट्रेजरी में एंट्रीज हो रही है और जो कैश बुक में एंट्री हो रही है। जो टोटल एनालिसिस है उसका वो आप रिमार्क्स कॉलम में एंटर करेंगे। जो प्रोग्रेसिव टोटल ऑफ पेमेंट्स है वो रजिस्टर ऑफ डिसबर्समेंट्स में भी उसको कंप्लीट करेंगे and it should be confined to a daily record of payments to entitled payees जिनको मिलना चाहिए, उनका टोटल डेली अमाउंट भी आप एंट्री करेंगे डिसबर्समेंट रजिस्टर में। इसकी भी टोटल करेंगे एंड में एंड इट शुड बी मेड एट द एंड ऑफ द मंथ कि ये टोटल अमाउंट है। The daily totals of receipts in the register of receipts and of payments in the register of disbursements will be carried to the cash book. In the cash column, the closing balance of the previous month being noted as opening balance of the next month on the first day of that month. जो end में आएगा वो next में opening balance आएगा। Then payments into and withdrawals from the treasury should be accounted for in this cash book. जब ये amount, when the amount is paid into the treasury, an entry will be made on the payment side in the column cash, and उसके साथ ही will be made on the receipt side in the column treasury. ऐसे जैसे money is drawn from the treasury, an entry will be made on the payment side in the column treasury, and another entry will be made on the receipt side in the column cash. Then progressive balance on each day should be struck against the signature of the officer in charge. At the close of the month, there will be no cash balance in the hand of the Nazir. The balance with the treasury as per treasury column of the cash book should be worked out and
agreed with the balance as shown in the treasury passbook. मतलब कंपैरिजन होगा कैश बुक का और ट्रेजरी पासबुक का. अब जब एक डिपॉजिट टेंडर होता है बाय डिपॉजिटर इन पर्सन, वो क्या करेगा? ही विल प्रेजेंट एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट. दिस एप्लीकेशन will be verified from the judicial record of the case concerned by the अहलमद. और अगर वो अहलमद को एप्लीकेशन में सारे रिकॉर्ड जो है ठीक लगेगा, कंटेंट्स ठीक लगेंगे, तो वो आगे नाजिर को पास कर देगा. नाजिर उसके बाद कॉलम्स 1 to 7 फिल करेंगे रजिस्टर ऑफ रिसीट्स में, और एक रसीद प्रिपेयर करेंगे ऑन द फॉइल एंड काउंटर फॉइल ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड अपने इनिशियल्स करेंगे और सीरियल नंबर ऑफ द एंट्री रजिस्टर ऑफ रिसीट्स में एंटर करेंगे. जो नाजिर है उसके बाद he will produce the depositor, जो depositor and these documents before the presiding officer, who will, if he approves the deposit, shall initial column 8 of the register of receipts and then hand over the foil of the receipt to the depositor and receive the money from him. फिर presiding officer क्या करेंगे? He shall pass the money and the application to the Nazir for further action. और अगर वो अप्रूव नहीं करते डिपॉजिट को, he shall cancel the entries which have been made by the Nazir in all these documents, including the register, with his own signature. Presiding officer उसको कैंसिल कर देंगे, सभी एंट्रीज को जो नाजिर लिखी, और उस पे साइन कर देंगे. When a deposit is made by a bailiff or a court auctioneer, वो भी एक सिमिलर एप्लीकेशन देंगे, उनको भी एक रसीद दी जाएगी. पर जो अमाउंट डिपॉजिट होगा, that will be shown as deposited by the on behalf of the judgment debtor. और जो receipts bailiff को दी जाएंगी, those will be pasted in their notebooks. अगर कोई अमाउंट डिपॉजिट होता है थ्रू पोस्ट, बाय पोस्ट आता है by way of check issued by government department, या by remittance transfer receipts, so the accompanying letters will be treated as application. और जो रसीद जो होती है will be sent to the depositor with an endorsement showing the manner of remittance. जो चेक और रेमिटेंस ट्रांसफर रिसीट है, ये ट्रेजरी में भेजी जाएगी सेम डे, and the Nazir's accounts being balanced by showing the amount as paid into the treasury in the manner provided for remittance of surplus balance, जैसा कि रूल्स 27 और 28 में बताया है. So जो पर्टिकुलर्स है चेक के या RTR, जो रेमिटेंस ट्रांसफर रिसीट, इसको कहाँ एंट्री की जाएगी? इंटरमीडिएट रजिस्टर. जब मनी ऑर्डर से अमाउंट आता है तो मनी ऑर्डर कूपन को एप्लीकेशन ट्रीट किया जाएगा, रसीद बनाई जाएगी, और जो रसीद है उसको कूपन के साथ अटैच करके जुडिशियल रिकॉर्ड में प्लेस किया जाएगा. अभी जैसे हमने बात की कि जितने भी मनी ऑर्डर्स आते हैं एड्रेस टू द कोर्ट, उसको रिसीव कौन करेगा? प्रिजाइडिंग ऑफिसर.
अब कई डिपॉजिट्स हैं इन कोर्ट्स विच मेंटेन अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू द कैश सिस्टम. सो रूल 18 में है ये बात. In respect of prohibitory orders issued by against salaries of government servants, railway employees, उनकी जो है वो कैसे करी जाएगी? When a government servant or a railway employee is paid by an office which is situated in a station other than at which the court issuing the prohibitory order is located. प्रोहिबिटरी ऑर्डर तो ए स्टेशन पे हुआ, वो एम्प्लॉय है बी स्टेशन पे, तो द सैलरी डिसबर्सिंग ऑफिस मस्ट रिमिट द अमाउंट टू द कोर्ट बाय पोस्टल मनी ऑर्डर, द पोस्टल मनी ऑर्डर कमीशन बीइंग डिडक्टेड फ्रॉम द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द अटैचमेंट ऑर्डर. अब वो जो कमीशन है वो अमाउंट काट के पैसे भेजे जाएंगे. Where a government servant or railway employee is paid by an office which is situated in the same station at which the court issuing the prohibitory order is located, then the salary disbursing office must pay the amount to the court in cash or remitted by postal money order in the same manner जैसे पहले अभी बताया. Then presiding officers of courts shall endorse all prohibitory orders with clear instructions. The salary disbursing officers को guide करना है how to pay into the courts to money attached. जितनी भी पेमेंट्स दी जाएंगी सभी के सभी रजिस्टर ऑफ डिसबर्समेंट एंड रजिस्टर ऑफ रिसीट्स के अप्रोप्रिएट कॉलम में एंट्री की जाएगी. जब एक एप्लीकेशन आती है फॉर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, जब कोर्ट में एक एप्लीकेशन ऐसी आती है तो नाजिर उसको चेक करेंगे विद रेफरेंस टू द एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ रिसीट्स एंड इफ द बैलेंस इज सफिशिएंट देन ही विल प्रिपेयर अ वाउचर जो कि सिविल अकाउंट कोड फॉर्म नंबर 27 और पंजाब स्टीरियो A&T फॉर्म नंबर 267 होगा, and he shall get it signed by the presiding officer of the court concerned. अब नाजिर और क्या करेंगे? He will then take the pay's receipt which is duly stamped according to Rule 5 and pay the amount out of the current receipts. The payment will be recorded in the register of disbursements. उसमें पूरी डिटेल्स ऑफ द ओरिजिनल डिपॉजिट दी जाएंगी और उसमें डेट ऑफ रीपेमेंट, अमाउंट ऑफ रीपेमेंट will also be made and in the register of receipts against the original receipt entry. ये सारी प्रिजाइडिंग ऑफिसर की प्रेजेंस में ही होना चाहिए काम, and it shall be his responsibility to see that the amounts are paid to the proper claimants and the entries made in respect of these transactions are duly made in the appropriate registers. और उस पे इनिशियल्स होने चाहिए जो लोग एंट्री करते हैं और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के भी. अब अगर अमाउंट ऑफ द करंट रिसीट्स is not sufficient to meet a demand, in that event, repayment shall be made by means of a check on the treasury in favor of the actual claimant, and it shall be signed by the presiding officer. उसमें नंबर एंड डेट जो है वो वाउचर पे भी लिखी जाएगी और उस पे लिखा होगा
paid by check number so and so, dated so and so. All repayments of deposits, whether made from current receipts or by check on the treasury against surplus collections remitted to it, shall be recorded in the register of receipts and register of disbursements under the initials of the presiding officer. जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं आर्टिकल्स 201, 202, 210 सिविल अकाउंट कोड वॉल्यूम 1, those have to be followed. ये मैनुअल में रिप्रोड्यूस हुई है. Presiding officer will also ensure that each application for repayment is duly cancelled over his signature so that a second payment cannot be made. Then all the vouchers paid by the Nazir out of receipts shall be stamped paid by himself. In the case of repayment to be made by a transfer credit to government account, checks will be prepared in the manner laid down in Rule 22, and such checks will be drawn in favor of self. And उसमें endorsement क्या आएगी? Received payment by transfer credit to, जो भी नाम है. So अब हम बात करेंगे ड्यूटीज ऑफ सिविल नाजिर. क्या काम है उनका? प्रिपेयरिंग ऑफ कंटिंजेंसी बिल्स अंडर द हेड्स ऑफिस एक्सपेंसेस, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट रेट एंड टैक्सेस. अब जो बिल्स प्रिपेयर होते हैं उसमें क्या करा जाता है? रिक्विजिशन होती है पहले, वेयर एवर रिक्वायर्ड, नोटिंग होती है, कोटेशंस मंगाई जाती हैं, फिर से नोटिंग होती है, फिर बिल मंगाए जाते हैं, एंड और डिटेल्स फॉर एडिंग पे इन IFMS, फिर से नोटिंग होती है. देन प्रिपेयरिंग सैंक्शन ऑर्डर्स, बिना सैंक्शन के तो कुछ परचेज नहीं किया जा सकता. सबमिशन ऑफ बिल इन IFMS, फिर उसके बाद एंट्री ऑफ बिल इन बिल बुक एंड बजट रजिस्टर. मेंटेनिंग बिल बुक, बजट रजिस्टर, कैश बुक, ये किसका काम है? सिविल नाजिर. मेंटेनिंग स्टॉक रजिस्टर, मेंटेनिंग CCD रजिस्टर, उसमें एंट्री ऑफ अमाउंट्स एंड मार्किंग ऑफ RD/GR नंबर, सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स टू द कोर्ट्स, then preparation of DRO voucher for disbursement of amount, फिर entry of disbursed amounts in CCD register, obtaining budget from the Honorable High Court, then preparation of expenditure statement, e-filing of returns of GST and TDS deducted, looking after the work of auction and related correspondence of public utility services at judicial court complex, फिर income and expenditure on prescribed registers and cash book under compound fund rules, ये सारे accounts maintain करने. Then District Nazir is responsible to collect succession fee from the treasury to prepare succession certificate by the concerned board. Then he is responsible to look after the work of tender process,
of cleaning and sanitation work of judicial court complexes at district headquarters and also at subdivisions. Then what are the duties of fine muharrar? जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं वो फाइन इम्पोज करती हैं ऑन कन्विक्शन इन ट्रैफिक चलान्स. कई बार श्योरिटी बॉन्ड्स जो हैं वो फोरफीट हो जाते हैं तो उसका अमाउंट लिया जाता है. पेनल्टी रिकवर होती है एज फाइन. So the amount collected is deposited in treasury through fine muharrar at district level and nazir at subdivision level. अब जो हाईकोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 4 चैप्टर 11 इसमें ये लिखा गया है कि जो भी फाइन है कन्विक्शन का, समरी का, पेनल्टी अमाउंट का, जो भी कोर्ट जो क्रिमिनल कोर्ट है वो इम्पोज करती है, that amount of fine will be handed over to fine muharrar at 10 or 10:30 AM सुबह 10 साढ़े 10 बजे, ताकि वो अमाउंट बैंक में डिपॉजिट किया जा सके. Every court through reader generates online bank voucher and challan voucher by mentioning the head on challan voucher that is different for subordinate and session court. और वो किसको हैंड ओवर किया जाता है? फाइन मुहर्रर को. Then entry in the general register of fines maintained by fine muharrar on day-to-day basis is checked by the chief judicial magistrate. वो हर एंट्री चेक करते हैं और अमाउंट टोटल जो है वो चेक करते हैं. The fine is deposited in the bank and the voucher receipt and challan voucher is returned to respective reader. रीडर जो है वो क्या करता है? उसको फाइन रजिस्टर में पेस्ट कर देते हैं. वाउचर रिसीट, चलान वाउचर जो है. अगर सिस्टम डाउन है तो बैंक से लेटर ली जाती है कि वाउचर जनरेट नहीं हुआ और वो लेटर पेश कर दी जाती है. दैट इज चेक्ड बाय द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. इसकी एंट्री जो है दैट इज आल्सो मेड इन कैश बुक रजिस्टर. अब फाइन मुहर्रर एक और रजिस्टर मेंटेन करते हैं जिसे रिफंड वाउचर रजिस्टर कहा जाता है फॉर द रिफंड ऑफ फाइन्स. तो ये जो फाइन है ये रिटर्न किया जाता है अंडर द डिजिटल सिग्नेचर ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट and the amount is deposited in the account of the person to whom it has to be refunded. Warrants for realization of fine are sent by Sessions Court to Chief Judicial Magistrate. और Chief Judicial Magistrate के पास जब ये रिसीव होते हैं तो he gets the particulars entered in the proper page of the general fine register and the fine muharrar will then be responsible that proper steps are taken for the realization of the fine. फाइन मुहर्रर की जिम्मेदारी है कि रजिस्टर को सही तरीके से मेंटेन करें, प्रॉपर स्टेप्स लिए जाए फाइन को रिकवर करने के लिए, और जो अमाउंट आता है उनके पास उसको ड्यूली डिस्पोज ऑफ किया जाए जैसी डायरेक्शन से. सभी जो फाइन मुहर्रर्स हैं वो डील करेंगे विद द बेल बॉन्ड्स, श्योरिटी बॉन्ड्स received in pursuance of bail orders from Supreme Court and High Courts in conviction matters pending in the higher courts.
अब हम बात करेंगे सिविल कोर्ट मालखाना की। इसके बारे में लिखा हुआ है वॉल्यूम 4 चैप्टर 10D ऑफ द हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स। अब एक कॉमन रूम स्टोर रूम है हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में फॉर ऑल सिविल कोर्ट्स ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, एंड दिस कॉमन स्टोर रूम is under the control of civil nazir, and इसको क्या कहते हैं? Civil nazir's malkhana. The malkhana shall be placed under the direct supervision of the civil judge senior division. The officer in charge shall examine and countersign the register at least once in a month, and he shall inspect the contents of malkhana at least once in 6 months. Then at the time of 6 monthly inspection, he shall report to the district judge the total value of property lying with the civil nazir, और एफर्ट किए जाएंगे कि जो प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करने वाली है उसको डिस्पोज ऑफ किया जाए। इसमें एक चौकीदार तैनात होता है। हर एक सिविल नाजिर को एक स्ट्रॉन्ग बॉक्स दिया जाता है फॉर जिसमें वो क्या रखेंगे, छोटी मोटी चीजें जैसे कोई किसी की ज्वेलरी है या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, बट अप टू द वैल्यू ऑफ 1000 रुपीज। जो ये स्ट्रॉन्ग बॉक्स है इसको आउटर रूम ऑफ द ट्रेजरी में रखा जा सकता है अगर ये खुली है, और अगर ये ट्रेजरी बंद हो जाती है तो सिविल नाजिर के मालखाने में रखा जाता है। जहां 1000 रुपए से वैल्यू एक्सीड करती है वहां पे वो अमाउंट जो है या वो चीज जो है वो सिविल नाजिर की कस्टडी में नहीं रखी जाएगी, and it shall be made over to the treasury officer for safe custody in the treasury under the orders of the deputy commissioner. इसकी एंट्री की जाएगी ट्रेजरी ऑफिसर के द्वारा in the special register kept in form PFR2, जो कि काउंटर साइन होगी every month by district magistrate or by the additional district magistrate. जो कॉलम 1 से 5 है मिसलेनियस रजिस्टर F के, वो सिविल नाजिर के द्वारा भरे जाएंगे ऑन द रिसीट ऑफ द प्रॉपर्टी, जब प्रॉपर्टी उनके पास आएगी। और जो नंबर गिवन टू द डिपॉजिट इन कॉलम नंबर 1 shall be noted by the nazir on the record of the proceedings ordering the property to be made over to him. So कॉलम 6 से 8 जो है वो फिल कब होंगे? जब प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ हो जाती है। अगर प्रॉपर्टी प्राइवेट पर्सन को डिलीवर होती है तो द डिलीवरी शैल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द कोर्ट ऑर्डरिंग द डिलीवरी और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द मालखाना एज मे बी कन्वीनियंट। It shall be attested in column number 6 by the initials of the officer responsible for the delivery. और जहां पे स्टोर रूम सब डिविजन में है, सब डिविजन में वहां पे जो स्टोर रूम है इट शैल बी अंडर द इमीडिएट कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द नायब नाजिर। नायब नाजिर जो है ही शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ द कंटेंट्स, और जो चाबियां हैं वो सब्जेक्ट टू द जनरल सुपरिटेंडेंस ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज shall be with the नायब नाजिर। जो वैल्यूएबल ज्वेलरी है या डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहां पे भी स्टोर हाउस में, स्टोर रूम में नहीं रखे जाएंगे। इट शैल बी केप्ट इन द लोकल सब ट्रेजरी, और जहां पे सब ट्रेजरी नहीं है then the said property will be transferred to the safe custody at district headquarters, वहां ट्रेजरी में रखी जाएगी। और जो पेरिशेबल आइटम्स है, जो खराब होने वाली चीजें हैं या जानवर हैं,
shall not be retained by the civil nazir or naib nazir, but they shall be handed over to the superdar. तो जो फॉर्म्स हैं वो सब हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में दिए हुए हैं. सो इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट्स होंगे तो वी विल डिस्कस इन द इवनिंग. थैंक यू सो मच.